मीडिया बेस के प्लेटफॉर्म तो जी अज प्रोग्राम में जिहड़ियां जानकारियां ने उन्हां वल साडा सारिआं दा पूरी तवज्जो देना फर्ज है और बिल्कुल उस वक्त ये जानकारी साडे कम आउंदी है जदों असीं सोचदे हां काश सानूं भी इस बारे पता हुंदा जे हाँ सरी दे विच यात्रा लई आ रहे हो जां फिर सरी दे विचों तुसीं जा रहे हो। नैचुरली सुभावक है बार्डर का क्रॉस होना कुदरती है मुल्कां दे खास तौर ते सरी दे विचों दा बार्डर भी साडे नाल है इस तरह भी माड़ा जिहा उप्पर नूं तक्को तो सानूं बार्डर है जिहड़ा दिखदा है और इहदे फायदे भी बड़े ने और इस दे नाल सहूलतां जिहड़ियां ने उन्हां दा तां बेअंत ने और सुभावक है जदों कोई भी व्यक्ति सरी दे जदों बार्डर क्रॉस ही करदा है सब तो पहलां सरी 'च एंटर करदे है और एंटर करते समय किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना चाहिए और प्लस सरी दे विच तुहानूं की सहूलतां प्राप्त हो सकदियां डेफिनेटली उन्हां बारे असीं गलबात करदे ही रहने आ और वो जारी रहेगा। पर बार्डर जदों क्रॉस करना तुसीं सरी वल नूं आ रहे हो तो बार्डर दे उत्ते की तुहाडे फर्ज बनदे ने पूरे करने और किहड़े सवाल ने जिहड़े तुहानूं कीते जा सकदे ने किहड़े एहतियात ने जिहड़े तुहानूं वरत लेने चाहिए। बिल्कुल दीदी इसके साथ साथ आपको पता है कि CBSA जो रूल्स है बॉर्डर्स एंटर करना और कनाडा में आना और कनाडा से बाहर जाना उसके कई रूल्स हैं और आपको पता है कि हमारे शहर जो सरी है कई बॉर्डर्स के साथ कनेक्टेड है जी चाहे वो इनलैंड बॉर्डर्स के बारे में बात कर रही हूँ। लैंड बॉर्डर्स में हमारे डगलस क्रॉसिंग जिसे आजकल पीसाज डगलस क्रॉसिंग कहते हैं जी। इसके साथ साथ वी हैव ट्रक क्रॉसिंग पैसिफिक ट्रक क्रॉसिंग देन वी आल्सो हैव आवर एल्डर ग्रोव क्रॉसिंग के सुमस बॉर्डर भी दूर नहीं है कई लोग सरी में एंटर करने के लिए एबट्सफोर्ड सुमस बॉर्डर भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम खास तौर से अपने बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे। डगलस जो बॉर्डर है वो 220 हाईवे नंबर 99 पर है। ज़्यादा करके जो टूरिस्ट है हमारे शहर में आते हैं ब्लेन वाशिंगटन से जो पोर्ट है उसमें से एंटर करते हैं तो डगलस बॉर्डर यूज़ करते हैं ज़्यादा करके लेकिन जो ट्रक्स वगैरह और या बड़े कमर्शियल व्हीकल्स या कैंपर वगैरह लेकर आते हैं दे एंटर फ्रॉम पैसिफिक क्रॉसिंग ट्रक बॉर्डर। और जो बॉर्डर में जो सेवावा है कई सर्विसेज होते हैं वहाँ पर। अब आपको पता है ड्यूटी फ्री शॉप्स भी बड़े होते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स में किस तरह से शॉपिंग कर सकते हो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने ड्यूटी फ्री शॉप में शॉपिंग कर ली और फिर आपको बहुत सारे टैक्सेस पे करना पड़ेगा क्योंकि आप और तुसी अलाउड ही नहीं सीगे उत्थों ड्यूटी फ्री शॉपिंग कर। हाँ जी तो ये सारी जो बातें हैं लैंड बॉर्डर्स के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। वैसे 24 आवर्स हमारे जो डगलस बॉर्डर है वो खुले होते हैं हफ्ते के 7 दिन यानी 7 दिन हफ्ते के किसी भी वक्त आप आओगे डगलस बॉर्डर आपको जो पीसाज डगलस बॉर्डर है वो खुला मिलेगा। इसके साथ साथ जो नेक्सस लेन्स है कनाडा वालों के लिए जो ओपन है वो 7 दिन हफ्ते के खुले होते हैं सुबह 7 बजे से लेके 23 PM तक जी। सो 7 till 11 जी बिल्कुल। So that's how the lanes are open for Nexus। और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ आप जाते हो तो वो सुबह 6 बजे से लेके 24 PM तक खुले होते हैं। So 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक खुले होते हैं नेक्सस ट्रैवलर्स। और नेक्सस जो ट्रैवलर्स है उनके लिए एक अलग कार्ड होते हैं जिसमें उनको सेवावा अलग तरीके से दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल तुसीं आप ही कार्ड है जिहड़ा फ्लैश करके तुसीं अपना जिहड़ी शनाखत है उसनूं दस सकदे हो और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जिहड़े उत्थे अधिकारी बैठे हुंदे ने कई दफ़ा वो चैक कर लेंदे ने तुहाडा कार्ड देख के तो कार्ड लैके और कई दफ़ा जिहड़ा वो सिर्फ अगर तुसीं शनाख्ती कार्ड स्कैन किया सामने मशीन दे और तुहानूं सीधा ही जाण दिंदे ने भाव बार्डर क्रॉसिंग है जिहड़ी दोवां पासिਆਂ तो उसनूं रफ्तार नूं तेज करन दे लई जिहड़ा नैक्सस है उसकी वरतों की जाती है। यूजुअली हम लोग स्मार्ट होते हैं तो बॉर्डर वेट टाइम्स जो है आप हमारे 106.9 FM पर भी सुन सकते हो या आप अपने तरीके से भी बॉर्डर वेट टाइम्स के बारे में जान सकते हो। सो जो बॉर्डर्स ओपन होते हैं वो कितने बजे होते हैं वहाँ के वेट टाइम्स क्या है ये सब आपके लिए जानकारी होना ज़रूरी है जब भी आप हमारे शहर में आते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी बातें हैं जो स्मार्ट एंड सिक्योर बॉर्डर टूल्स है ट्रैवल ट्रेड के लिए इसके
बारे में भी आपको जानना ज़रूरी होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज सपोर्टिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर, वो क्या है। इसके साथ साथ ट्रैवलिंग विद अ डिसेबिलिटी, अगर कोई भी आपके साथ डिसेबिलिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो असिस्टेंस बॉर्डर क्लियरेंस के लिए, प्रोसेस के लिए। कंप्लीटिंग योर डिक्लेरेशन स्पेशल सर्विस काउंटर भी असाइन किया गया है। बिल्कुल, पार ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਗੈरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਜ਼रूरी है कि पहला पूरी दी पूरी ਤੁਹਾਡੇ पास जानकारी होनी चाहिए। और CBSA के ऑफिसेस कहाँ है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ CBSA के ऑफिसेस है। कोई भी टूरिस्ट हमारे शहर में आते हैं या कनाडा में एंटर करते हैं तो उनको अपने लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि CBSA ऑफिसेस कहाँ है, कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। जहाँ चाहे वो हमारे ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया है, बहुत सारे CBSA ऑफिसेज है यहाँ पर। लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो है CBSA ऑफिसेज के आप ज़रूर ले सकते हो। इसके साथ साथ दीदी जो जनरल टेलीफोन रिपोर्टिंग जो होते हैं उसके बारे में भी आपको जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। हाउ इट वर्क्स उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे मुल्क में आने से पहले ज़रूर जानना चाहिए। ट्रैवल एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स टू एस्टेब्लिश योर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप्स ट्रैवलिंग विद माइनर्स होना ज़रूरी है। और ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ये बिल्कुल CBSA के वेबसाइट जो है उस पर हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है। फिर इसके बाद में बॉर्डर रिमाइंडर चेकलिस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। CBSA एनकरेज करते हैं सारे रेसिडेंट्स को रिटर्निंग टू कनाडा टू हैव अ स्मूथ बॉर्डर क्रॉसिंग। सो जो लोग बाहर गए हुए थे अब वापस कनाडा में आ रहे हैं उनको अपने बॉर्डर क्रॉसिंग के बारे में जो चेकलिस्ट है उसे तैयार कर लेना चाहिए। प्लान अहेड एंड चेक बॉर्डर वेट टाइम्स, अवॉइड क्रॉसिंग ड्यूरिंग पीक ट्रैवल टाइम्स लाइक वीकेंड इवनिंग्स, कंसिडर क्रॉसिंग एट लीस्ट बिजी पोर्ट ऑफ एंट्री इन द एरिया। जी, इसके साथ साथ रेसिडेंट्स कैन एस्टिमेट ड्यूटी एंड टैक्सेस टू चेक इन एडवांस व्हाट यू माइट हैव टू पे ऑन स्पेसिफिक परचेसेस सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ड्यूटी होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो इसके लिए अगर आप कुछ भी बाय करके आते हो आपको देखना पड़ता है कितने घंटे आप बाहर थे और कितने आप सामान ला सकते हैं, कितने टैक्सेस उस पर पड़ेंगे और की ले सकते हो की नहीं ले सकते। बिल्कुल, मेक श्योर योर परचेसेस और आइटम्स कमिंग इनटू कनाडा आर नॉट ऑन अ लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स। सो जो प्रोहिबिटेड गुड्स है उनको आप चेक कर लो कि ये कहीं इनके कैटेगरीज में तो नहीं आते। Transporting cannabis across the border in any form, including any oils containing THC or cannabidiol, CBD, without a permit or exemption authorized by Health Canada remains a serious criminal offense, subject to arrest and prosecution despite the legalization of cannabis in Canada. बड़े ही क्लियरली CBSA वालों ने कहा है कि अगर आप CBD या THC, कई लोगों को गोडे चे दर्द होते हैं, दे कीप CBD ऑयल विद देम, बट जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, बॉर्डर वापस आते हो, यू हैव टू नो दैट यू कैन नॉट कैरी दैट फॉर मेडिकल रीजंस। आपके पास एक लेटर होना चाहिए एग्जाम्पशन का और वो अथोराइज्ड होना चाहिए हेल्थ कनाडा की तरफ से। अगर ये नहीं है आपके पास और आपको बॉर्डर ऑफिशियल्स को बताना पड़ेगा, अगर आप नहीं बताते हो तो फिर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, आप अरेस्ट भी हो सकते हो, बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है। फिर आपको क्रिमिनल लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको गगन नाहल को कॉल करना पड़ेगा, बड़ा प्रॉब्लम्स होना है फिर। तो याद रखो, कैनबिस लीगलाइज कनाडा में हो चुका है, लेकिन आप CBD और THC लेकर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा ना, लीगल होया कनाडा च, बार्डर दे आर पर करने ਲਈ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ जी। और ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋਡਾ ਦੁਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ बन सकता है। जी, इसके साथ साथ दीदी एक बात जो कई बार हम लोग भूल जाते हैं,
organic products among your goods, Yeah. foods, plants, animals. ये जो प्रोडक्ट्स है सच एज अनट्रीटेड वुड एंड सोवेनियर्स टू द बॉर्डर सर्विस ऑफिसर्स, जो अनट्रीटेड वुड लकड़ का जो सामान भी है वो भी सुवेनियर के तौर पे भी अगर आप बाहर लेकर जाते हैं तो बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर को आपको बताना पड़ेगा. ये गुड्स, सम गुड्स में बी रिस्ट्रिक्टेड. आप बॉर्डर क्रॉस करते वक्त जो जो आइटम्स लेकर जाते हो, आप CBSA के वेबसाइट पे जाकर ऑटोमेटेड इंपोर्ट रेफरेंस सिस्टम में जाकर देख लो कि आप जो स्पेसिफिक इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स है इन गुड्स की वो क्या है. ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਸਾਡੇ BC ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो फूड आइटम्स है जी, जैसे केला है, फ्रूट्स है, संतरे है या फिर एप्पल्स है, अपा रख लेंगे कि भूख लगेगी तो वी आर गोना ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈ ਖਾ ਲਾਂਗੇ. पर यू कैन टेक दैम. अगर बॉर्डर सर्विसेज वालों को आप डिक्लेयर करोगे तो वो या तो उसे चक के गार्बेज में सुट देंगे, कोई अच्छा होगा वो बोलेंगे खा लो यहीं पर खड़े होकर. So these are the things that you have to be very careful. Food, plants, animals या कोई भी untreated wood and souvenirs आप बॉर्डर से पार ले जाना चाहते हो इस पार या उस पार बॉर्डर की, तो आपको ये बॉर्डर ऑफिसर्स, सर्विस ऑफिसर्स को ज़रूर बताना पड़ेगा. इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई पेट्स है, बिल्ली है, डॉग है, या फिर पीपल हैव अदर पेट्स लाइक birds है, if you're taking your pets, know that dogs and cats that are 3 months of age or older need valid, signed and dated certificates from a veterinarian verifying vaccinations against rabies. So याद रखो, ये सर्टिफिकेट्स आपको वेट से लेना पड़ेगा. 1 से 3 साल तक ये एक्चुअली वैलिड होते हैं. सर्विस डॉग्स आर एग्जाम्प्ट व्हेन अकम्पनीड बाय देयर ओनर्स. सिर्फ जो सर्विस डॉग्स है वो जा सकते हैं विदाउट दिस सर्टिफिकेट, लेकिन अदर पैट्स जो है उनको ये वेट के पास से वेरीफाई करना पड़ेगा वैक्सीनेशन अगेंस्ट रेबीज. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੋਤਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ. बिल्कुल. सो मेक श्योर करो कि आप अपने पेट्स को ले जाते हो, बिकॉज यू डोंट वाना लीव योर पेट्स एनीवेयर. यू वाना टेक योर पेट्स, उनको अपने वेट के पास ले जाकर वेरीफाई कर लो वैक्सीनेशंस की अगेंस्ट रेबीज. और इसके साथ साथ याद रखो, अगर आपके पास सर्विस डॉग है वो एग्जाम्प्ट है इसके लिए. इंश्योर करो कि आपका जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है आपके फैमिली मेंबर्स के सही तरह से विजिबल, रीडेबल होना चाहिए जी. कई बार हमारे पासपोर्ट्स का वो हालात होता है कि उसे पढ़ भी नहीं सकते हो. ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭੋ ਸੰਭਾਲ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭੋ ਸੰਭਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸਕੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ. ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक्सेप्टेबल फॉर्म जो आइडेंटिफिकेशन है टू एंट्री इनटू कनाडा इंक्लूड पासपोर्ट, नेक्सस कार्ड या एनहांस्ड ड्राइवर्स लाइसेंस. ये तीनों आइडेंटिफिकेशन आप लेकर एंटर कर सकते हो कनाडा में. Declare all purchases and have your receipts readily available. Residents can bring back tax and duty-free goods valued $200 Canadian after being away for 24 hours, and goods valued at $800 Canadian after 48 hours. There are no personal exemptions for same-day cross-border shopping trips, so be prepared to pay tax on those purchases and possibly duty.
और बहुत सारे लोग ने आशा ना हाँ जी, जिन्होंने इस बारे पता ही नहीं। हाँ जी। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो और 24 घंटे बाद आप वापस आते हो तो आप टैक्स एंड ड्यूटी फ्री जो गुड्स है, जो आपके पास सामान है, वो कैनेडियन $200 प्रति व्यक्ति, $200 200 is $200 $200 तक ही आप ला सकते हो। उसके ऊपर जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कनाडा से 48 आवर्स दूर बाहर रहते हो तो $800 कैनेडियन आप ला सकते हो। उसके ऊपर का जो सामान होगा उसे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो कोई पर्सनल एग्जाम्पशंस नहीं है, सेम डे जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, शॉपिंग ट्रिप्स के लिए जाते हैं और वापस आते हैं, बी प्रिपेयर्ड टू पे टैक्स ऑन दोज परचेसेस। बिल्कुल, जेडे जान आउणी करते हैं टैक्स के साथ ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। बिल्कुल, दो ही चीज़ां जड़ियां ने कहते ने सगी नाल परांदा बिल्कुल होंदा है। इसके साथ साथ एक बात और ख्याल करना पड़ेगा आपको, करेंसी कैनेडियन $10,000 से ऊपर, $1 भी ऊपर हो आप इधर उधर, कैनेडियन डॉलर। हाँ जी, कैनेडियन डॉलर। अमेरिकन का भलेखा ना खाओ। हाँ, बल्कि कैनेडियन डॉलर ने ਜਿਹੜੇ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 10,000 ਦਾ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। 10,000 या 10,000 से ऊपर आपके पास एक भी डॉलर ऊपर है 10,000 से या $10,000 है तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑन अराइवल। आप एक कैश पैसे क्रॉस नहीं कर सकते बॉर्डर। ਅਕਸਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ 10,000। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੂਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਟੂਨੀ ਵੀ ਹੈ, that can get you in that। और अगर हस्बैंड एंड वाइफ ट्रैवल करते हैं, मैं अक्सर ये सोचती हूँ 10,000 नहीं, अगर दोनों का मिलाकर भी 10,000 हो तो you should tell the border service officer that both of us are carrying $10,000 or more currency। It's always better। ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। इसके साथ साथ if traveling with firearms or weapons, you must declare them when you enter Canada। Failure to do so means border services officers may seize the weapons and file criminal charges। Most weapons are prohibited from entering Canada, including tasers। सो कोई भी फायर आर्म और वेपन अगर आप कनाडा में लेकर आते हो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू एंटर, अगर डिक्लेयर नहीं करोगे और आप बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर्स को पता चल गया तो वो वेपन्स भी सीज हो जाएगा, आप पर क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे और बहुत कुछ और फेस करना पड़ेगा। ਨਾਲੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ simply declare it। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca 106.9 FM और इस वक्त हमारे 106.9 FM का जो स्टेशन है, इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन इट टू डू सम चेंजेस, डू सम टेस्टिंग ऑन इट। और जब ये टेस्टिंग ओवर हो जाएंगे, हम अपने ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाएगी, देन वी विल लेट यू नो। और फिर हम रेगुलर प्रोग्राम्स जो है 106.9 FM पे ज़रूर पेश करेंगे। ज़रूर साथ देते रहिए, सुनते रहिए www.mwlive.ca। वापस आएंगे CBSA ट्रैवल टेस्टिंग बॉर्डर्स के हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। साथ जरूर देते रहिए, सुनते रहिए www.mwlive.ca। ले पहले केक ऑर्डर करा, फिर वैनकूवर जावा, वापस सरे आना, फिर तक केक कटन ले देर हो जाना। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਵੇਗਸ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੇਸਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਐਂਡ ਕੋ ਬੇਕ ਸ਼ਾਪ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਕੇਕਸ ਤੇ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 604 503 1353 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਵੈਡਿੰਗ ਕੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਕਸ, ਕੱਪ ਕੇਕਸ, ਪੇਸਟਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਕੇਕ
सिंक जार्ज क्वालिटी ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿਡਨ ਜੈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 1341171 A ਐਵਨਿਊ 6045031353 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045971119 ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਰਿਜ LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ unit number 2097928 Street 604-597-1119 Idea Immigration ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਮਾਓਏ ਫੋਨ 6042319592 ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604-231-9592 ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਕਾਲ HTA 6042319592 राज मीरा अमर सारे कहंदे चलो हवेली बिस्ट्रो आज तो हद हो गई हीरो ने भी कहा शाम नु चलदे आ हवेली बिस्ट्रो ये हवेली बिस्ट्रो की है जी हवेली बिस्ट्रो 7488 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਵੇਲੀ ਬਿਸਟ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 35074888 ਕਿੰਗ ਜॉर्ज बुलेवार्ड 6045031266 ਹਵੇਲੀ ਬਿਸਟ੍ਰੋ ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 1347878 ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਾਰਡ ਵੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ ਮੋਰਨੀ ਵੰਗਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਤੇ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਪੈਟਸ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੈਮੀਨੇਟ ਵਾਈਨਲ ਤੇ ਕਾਰਪੈਟ ਟਾਈਲਸ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਲਓ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 127788 132 ਸਟਰੀਟ ਸੇਲਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ ਸਨੀ ਪਰਮਾਰ 6045056462 ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਅਰੋੜਾ 6043389443 ਗੁੱਡ ਡੀਲ ਕਾਰਪੈਟਸ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਕੱਠ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ जी दोस्तों आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca और आज हम एंटरिंग एंड लिविंग कनाडा CBSA के कुछ रूल्स आप तक ज़रूर डिस्कस करना चाहते हैं और जैसे कि हमने कहा कि ट्रैवल टेस्टिंग और बॉर्डर्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं एंटरिंग कनाडा बाय एयर लैंड और मरीन मोड में दीदी तो आपको अब प्रूफ ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड नहीं है Pre-board testing is not required. COVID-19 pre-entry and arrival tests are not required. Quarantine after you enter Canada is not required. Using ArriveCan is not required, but to save time at the border, you can use the ArriveCan customs and immigration feature to complete your declaration in advance if you're flying into a participating international airport. Pre-boarding tests for cruise passengers are not required. As always, travel documents are required. Health checks to board planes and trains are not required. Wearing mask on planes and trains is not required.
It's strongly recommended that you wear a well-constructed and well-fitted mask or respirator while you travel. Recommend करते हैं, but required नहीं है. जी. If you have symptoms of COVID-19, you shouldn't travel to Canada. If you feel sick or experience any symptoms of COVID-19 during your travel to Canada or upon arrival, you should inform the flight attendant, crew staff, or a border service officer upon arrival. You may be referred to a quarantine officer for health assessment and further direction. Avoid taking public transportation. Check provincial or territorial requirements for what you need to do if you are symptomatic or have tested positive for COVID-19. इसके साथ साथ traveling in and out of Canada, you have to have international travel advice and advisories, COVID-19 and international travel information, proof of vaccination, find out if you need a visa. ये सारे कुछ आप स्टडी करके फिर आया करो. Wearing mask on planes and trains in Canada is not required anymore. It's still strongly recommended though कि आप पाओ तो अच्छी बात है. ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ. Yes. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਲਰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ that's their choice और recommend ही किया जाता जरूरी नहीं. जो विजिटर्स हमारे मुल्क को विजिट कर रहे हैं, कनाडा विजिट कर रहे हैं, चाहे वो बाय ट्रेन आ रहे हैं, बाय बस आ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, or they are flying into Canada. As a visitor, you can bring certain goods into Canada for your own use or personal baggage. की ले सकते हो कि नहीं ले सकते. हाँ जी. Personal baggage includes clothing, camping and sports equipment, cameras and personal computers. This also includes your mode of transportation, including vehicles, private boats and aircraft. You must declare all goods when you arrive at the first Cbsa port of entry. Our BSOs check goods you are bringing in or taking out of Canada to verify what you have declared. If you declare goods when you arrive and take them back with you when you leave, you will not have to pay any duty or taxes. These goods cannot be used by a resident of Canada, used on behalf of a business based in Canada, given as a gift to a Canadian resident, or disposed of or left behind in Canada. So जो सामान आप लेकर आते हो वो सामान आप वापस अपना नाल लेके जाओ. आपको कोई ड्यूटी नहीं पे करना पड़ता. The BSO may ask you to leave a security deposit for your goods. Your deposits will be refunded when you leave Canada with the goods. If this happens, you will be issued a temporary admission permit. We will keep a copy and give you one for your records. When you leave Canada, bring your goods and your copy of the temporary admission permit to the BSO. You will get a receipt and your security deposit will be refunded by mail. That's the rule. So ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. जी, ये जो बातें हैं थी ये what can you bring with you. जी. अब इसके साथ साथ making your declaration. जी. When arriving in Canada, you must by Canadian law report to a BSO. Answer all questions truthfully and accurately. Report your goods. This means you must also report any food, plant, animal products in your possession. जी. Have all required identification and travel documents in hand. Be ready to make a full and accurate declaration, including the amount of goods in Canadian dollars you are bringing with you. This जी. will help us get you on your way as quickly as possible. ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.
And if you're arriving by air or by land, if you're arriving by air or by land, follow the signs to the first checkpoint. A BSO will check your identification and other travel documents, and you will answer their questions. Arriving by a private boat, if you're arriving by private boat, go directly to a designated marine telephone reporting site and call the telephone reporting center TRC at 1-888-226-7277 to get CBSA clearance. For more information, you can visit CBSA's private boaters page. ਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾਟ ਜਸਟ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਪਰ ਬੋਟ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ जी इसके साथ साथ CBSA डिक्लेरेशन कार्ड जो है you need to know about your travels and what you're bringing into the country. CBSA declaration cards are given to passengers arriving by air and are also used at some locations of travelers arriving by train, boat and bus. Bring a pen in your carry-on baggage to complete the card before you arrive. Instructions on how to complete the card are attached to the form. You can list up to 4 people living at the same residence on one card. If there are more than 4 people living at your address, use one additional card for each additional group of 4 or fewer people. Once the cards are complete, you can detach and discard the instructions. Do not fold the card. Be sure to keep the card handy along with you, your identification and other travel documents. You'll be asked to show this card to our BSOs several times. If you have any questions about the card or Canadian regulations, ask the BSO when you arrive. इसके साथ साथ referrals for secondary service and inspections. At any point during your interaction with our BSOs at a port of entry, you may be referred to our secondary services and inspections area. We understand that travelers may feel anxious when crossing the border. Referrals to secondary inspection are a normal part of the cross-border travel process that any visitor to Canada may experience. ਕਈ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ जी ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ बल्कि एंजाइटी तो होती है नई जगह जाते हो you're entering or leaving the place you do have anxiety but you should not have be nervous नहीं होना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ Why you may be referred to secondary inspection. You may be referred to secondary inspection for a variety of reasons. For example, carrying out a random inspection. कभी-कभी offices random inspection करना शुरू कर देते हैं. Verifying your declaration or documentation. Asking you more in-depth questions about yourself or inspecting your goods. Admissibility to Canada or the admissibility of the goods in your possessions. Having you pay duty and taxes, completing or processing paperwork to support your entry or the entry of your goods to Canada. All travelers are protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Referrals are not made on any discriminatory basis such as race, nationality, religion, age or gender. ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋ nothing to worry about. If you're not hiding anything, if you're not you're telling the truth, honesty, of course things will ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਾ ਆਸ਼ਨ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Yes, and as well as if you have any doubt कि आप जो कैरी कर रहे हो वो कैरी कर सकते हो नहीं कर सकते हो, make sure करो कि border officers ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ कि I have this in my car, I don't know if this is allowed or not allowed। ਜਿੰਨੀ honesty ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ border officers ਨਾਲ present ਕਰੋਗੇ, that would be better। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। What to expect from secondary inspections? If you're referred for secondary services or inspection, an officer may ask you to provide detailed information about your plans while visiting Canada or the time you spent abroad. Make further inquiries, check records, or conduct research to verify your declaration. Confirm the guardianship of children traveling with you. Process the payment of duty and taxes. Inspect your luggage, purse, or wallet, electronics including laptops and cell phones, your vehicle, and any additional goods you are transporting. Examine visually your pet or any animals traveling with you. Ask you to produce evidence of the money you have available to fund your visit to Canada. Request that you produce receipts to amount for expenses you incurred or purchased made abroad, or count your cash or traveler's checks in your presence. While most travelers we inspect comply with Canadian laws and regulations, we do encounter individuals who are intent on breaking the law and who attempt to avoid detection. That is why the officers may not always answer specific questions about a secondary inspection. ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਲਰਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਟਸ ਨॉट ਵਰਥ ਇਟ। ਯੈਸ। एक जो सबसे बड़ा मसला है दीदी, ट्रैवलिंग विद अल्कोहल एंड टबैको। जी, that's another thing. Alcoholic beverages के बारे में बात करते हैं। You're allowed to bring into Canada only one of the following amounts of alcohol and alcoholic beverages free of duty and taxes. Alcoholic beverages are products that exceed 0.5% alcohol by volume. Certain alcoholic and wine products that do not exceed 0.5% by volume are not considered alcoholic beverages. For example, wine up to 1.5 liters of wine up to 53 fluid ounces to 750 milliliters of bottles of wine. Alcoholic beverages up to 1.14 liters up to 40 fluid ounces, 1 large standard bottle of liquor. Beer or ale up to 8.5 liters up to 287 fluid ounce, approximately 24 cans or bottles, 355 milliliters each of beer or ale. You must meet the minimum age of the province or territory where you enter Canada. Minimum ages are established by provincial or territorial authorities, 18 years for Alberta, Manitoba, and Quebec, and 19 years for the remaining province and territories. So anybody who brings it has to be 19 years old in Vancouver, in BC. And plus on time ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਵਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਦਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The Cbsa classifies cooler products according to the alcoholic beverage they contain. For example, beer coolers are considered to be beer and wine coolers are considered to be wine. The quantities of alcoholic beverages you can import must be within the limits set by provincial and territorial liquor control authorities that apply where you will enter Canada. If the amount of alcohol you want to import exceeds your personal exemption, you'll be required to pay the duty and taxes as well as any provincial or territorial levies that apply. Contact the appropriate provincial or territorial liquor control authority for more information before you return to Canada.
You must be of legal age in the province of importation. While you're allowed to import more alcoholic beverages than the amounts listed above, you will be responsible for paying duty and taxes on the additional alcoholic beverages you are bringing into Canada. If you need more information on bringing alcoholic beverages to Canada, consult the Alcohol and Tobacco Limits page on CBSA's website. ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਨੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। Tobacco products के बारे में कहते हैं, as a visitor or temporary residence, you may bring into Canada free of duty and taxes all of the following amounts of tobacco products as long as the items are in your possession when you arrive in Canada. You can speed up your clearance by having your tobacco products available for inspection when you arrive, whether they are stamped or unstamped. If you bring in tobacco products that exceed your personal exemption, you will be required to pay the regular duty and taxes as well as any provincial or territorial levies that apply on the excess amount. You must be 18 years of age to bring tobacco products into Canada under your personal exemption. If you wish to import cigarettes, manufactured tobacco and tobacco sticks duty-free as part of your personal exemption, the packages must be stamped duty paid Canada droit acquitting. You will find tobacco products sold by duty-free stores marked this way. Cigarettes, amount 200 cigarettes. Cigars, 50 cigars. Tobacco, 200 grams, 7 ounces of manufactured tobacco. Tobacco sticks, 200 tobacco sticks. A special duty rate applies to cigarettes, manufactured tobacco and tobacco sticks that are not stamped. Duty paid Canada, droit acquit. For example, if you claim a carton of 200 cigarettes as part of your personal exemption and it is not stamped, duty paid Canada, droit, you will be assessed at a special duty rate. Unstamped tobacco products import limits. In addition to your personal exemption amount, there are limits on the quantity of tobacco products that may be imported if it is not packaged and not stamped. Duty paid Canada, droit acquit. The limit is currently 5 units of tobacco products. 1 unit of tobacco product consists of one of the following: cigarettes, 200 cigarettes. Cigars, 50 cigars. Tobacco, 200 grams, 7 ounces of manufactured tobacco. Tobacco sticks, 200 tobacco sticks. For short visits, these quantities may be limited to amounts that are appropriate in respect of the nature, purpose, and duration of the visit. For more information, bring alcoholic beverage to Canada. Consult the Alcohol and Tobacco Limits page on CBSA. ਚੈੱਕ जी हर गल दे लई पहला चेक कर लो वरना लड़े दे देने पैंदे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन और रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड गुड्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट आफ्टर टेकिंग अ क्विक कमर्शियल ब्रेक।